हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं फीचर्स ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले बता दूं, ये जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के यूनिट 5 के ऑर्गेनाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर कर चुका है और सारे के सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सारे नोट्स बिजनेस स्टडीज के। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस प्रकार की पीडीएफ तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और वेरी रिजनेबल रेट में मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले पहला 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। तीसरा देखिए, लेस मैनेजरियल लेवल एज फार एज पॉसिबल मिनिमम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बी क्रिएटेड। फर्स्ट ऑफ मोर द नंबर ऑफ दिस लेवल्स मोर द डिलेस इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ इट विल टेक मोर टाइम टू कन्वे द डिसीजंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। फर्स्ट ऑफ सिमिलरली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल्स विल टेक मच टाइम इन रीचिंग एट द टॉप। फर्स्ट ऑफ उसके बाद देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल a manager can directly supervise. First, a person should supervise only that number of subordinates to whom he can directly keep contact. The number of people to be supervised may not be universally fixed because it will be influential by the nature of work. उसके बाद देखिए, simple and flexible. Organizational structure should be very simple. First of, there should not be any unnecessary levels of management. First of, the system should also be flexible to adjust according to the changing and needs. उसके बाद देखिए, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर लिखिए, द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम जॉब विद इन ए डिपार्टमेंट रेगुलरली। फर्स्ट ऑफ दस दिस इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा देखिए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अप टू मैनेजरियल लेवल। फर्स्ट ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो सेपरेटेड। फर्स्ट ऑफ दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ द वर्कर्स get guidance from expert supervisors and this enhances their performance at work. Last देखिए, number 3, scope for growth. The functional organization provides wide scope for growth and mass production. First of the employment of specialists at various levels of work enables the organization to grow as per the needs of the situation. उसके बाद देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अलाउज चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द डिस्ट्रीब्यूटिंग द होल वर्क। फर्स्ट ऑफ द स्पैन ऑफ सुपरविजन कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद देखिए, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। द यूज ऑफ स्पेशलिस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, मनी एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ एक्टिविटीज लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ फैसिलिटीज लाइक ऑफिस एकोमोडेशन, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, बेटर सुपरविजन। एवरी सुपीरियर इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन एरिया एंड ही विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग proper planning and execution. First of the superiors being well acquainted with the work, they will be able to improve the level of supervision. ठीक है, तो आज के लिए बस इतने। अगले वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क का। तो आई आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।